Hi children, today we are going to learn about the Roman numerals. Okay, we know the numerals like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 like that. Okay, the same numbers. Suppose how we are going to write in the Roman numerals. Okay, Roman numerals. What are Roman numerals? How do you write class 1? This is 1. Right? Roman numeral 1 we will write like this. 5 we will write like this. Like X, this is 10. Then L is 50 and C is 100, D is 500, M is 1000. Okay, this is 1, V is 5, X is 10, L 50, C 100, D 500, M is 1000. Using this, we are going to write the Roman numerals. So, before writing the Roman numerals, you have to learn the rules. What is the rule? Suppose if it is 1, we will write like this. This is 1. 2 means 2 lines. Class 3, how you write? Class 3 like this. Okay, but 4, no 4 lines. That means one number should not be repeated more than 3 times. Okay, more than 3 times. How do you write class 4? Like this. So what is the first rule? One number should not be repeated more than 3 times. That's why for class 1 we wrote 1 line, for class 2 we wrote 2 lines, for class 3 we wrote 3 lines. मतलब class 1 के लिए 1 line, class 2 2 lines, class 3 3 lines. But 4th class, so when you are in 4th class, how you used to write? 4 lines? No. Why? Because in Roman numbers, one number can be repeated only 3 times, not more than 3 times. How do you write 4? First you will write 1, then 5. That means 5 is the bigger number, 1 is the smaller number. Which side is the smaller number? To the right hand side or to the left hand side? Left hand side. Okay, suppose if the smaller number is on the left hand side of the bigger number, you have to subtract. How you have to subtract? V is 5. This is 1. 5 minus 1 is 4. समझ में आया? अगर छोटा नंबर बड़ा नंबर के लेफ्ट साइड में है तो बड़ा नंबर में से छोटा नंबर को निकालना है. That is why we will write 4th class like this. First we will write 1, then we will write 5. That means 1 is to the left side of 5. मतलब 1 5 के लेफ्ट साइड में है. अगर लेफ्ट साइड में छोटा नंबर है तो हम क्या करना है? बड़ा नंबर में से छोटा नंबर को निकालना है. So 5 minus 1. Okay, the same way, see here. This is 10. X is 10. This is 1. Right? So 1 is छोटा नंबर है, 10 बड़ा नंबर है. बड़ा नंबर के 10 के लेफ्ट साइड में छोटा नंबर है. तब क्या करना है? 10 minus 1, that is 9. समझ में आया? और एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ. रोमन न्यूमरल्स, एक लाइन रिप्रेजेंट्स 1, V is 5, X 10, L 50, C 100, D 500, M is 1000. Now we are going to learn first the rules. What is the first rule? We should not repeat a number more than 3 times. Because of that only, for first standard you wrote only 1 line, second standard you wrote 2 lines, third standard you wrote 3 lines. Okay, the next rule. Suppose if the number लेफ्ट हैंड साइड में जो भी नंबर है, अगर वो छोटा नंबर है तो क्या करना है?
बड़ा नंबर में से छोटा नंबर को निकालना है. Suppose see here, for example, I wrote 1 to the left hand side of the 5. So 1 is the left side of the 5. 5 बड़ा नंबर है, 1 छोटा नंबर है. छोटा नंबर किस तरफ है? लेफ्ट हैंड साइड है. तो अब क्या करना है? बड़ा नंबर में से छोटा नंबर को निकालो. So 5 minus 1 is how much? 4. समझ में आया? Now you take 10. 10 is the bigger number. Like 1 is the smaller number. Okay, where is 1? Left side or right side? Left hand side. अगर छोटा नंबर लेफ्ट हैंड साइड में है तो क्या करना है? बड़ा नंबर में से निकालो. So 10 minus 1 is 9. So this is the second rule. What is the second rule? If the smaller number is to the left hand side of the bigger number, then you have to subtract. That means छोटा नंबर बड़ा नंबर के लेफ्ट साइड में है तो क्या करना है? Subtraction करना है. That is the rule number 2. Now we are going to learn the rule number 3. Children, now you are in which class? 6th standard. So how you are going to write it in the Roman numerals? See. 5, 1. This is 6. How it has become 6? Now here the rule number 3 applies. What is the rule number 3? If the smaller number is to the right hand side of the bigger number. मतलब छोटा नंबर बड़ा नंबर के राइट साइड में है तो क्या करना है? ऐड करना है. V is 5 plus 1. This is 6. समझ में आया? Next year you will be going to 7th standard. How you will write? 5, 1, 1. So these are smaller numbers. So 5 plus 1 plus 1. 7. 1, 5, 1, 1, 1. This is 5 plus 1 plus 1 plus 1, 8. Okay, that means if the smaller number is to the right hand side of the bigger number, you have to add. That means छोटा नंबर बड़ा नंबर के लेफ्ट हैंड साइड में है तो हम ऐड कर सकते हैं. समझ में आया? 5 बड़ा नंबर है, 1 छोटा नंबर है. 1 which side है? राइट हैंड साइड. So you have to add. This is rule number 3. 5 plus 1 plus 1. 7. 5 के राइट हैंड साइड में 1, 1, 1 है. So इसलिए 5 plus 1 plus 1 plus 1 that is 8. What is the rule number 1? 9th standard. 9th हम कैसे लिखेंगे? 5 के बाद 4 lines. लिख सकते हैं क्या? No. What is the first rule? Number, we cannot repeat a number that means more than 3 times. So 5 plus 4 हम नहीं लिख सकते. फिर कैसे लिख सकते हैं? 10 minus 1. We know x is 10. 10 से 1 को निकालना है. निकालना मतलब which side you have to write? Left hand side. So this is 9. Okay. Now 11 कैसे आएगा? 10 plus 1 is 11. 10 plus 2 is 12. So how do you write 11? Plus. मतलब which side you have to keep? Right hand side. If you put a smaller number to the right hand side of the bigger number, then you can add. So right side I am keeping. This is 10 plus 1. 10 plus 1 is how much? 11. Same way 10 plus, this is 10 plus 1 plus 1 is equal to 12. Why I added? Because 1 and 1 is smaller than 10. And which side it is? 1 is to the right hand side of the 10. That means 1 छोटा नंबर है, वो 10 के राइट हैंड साइड में है. राइट हैंड साइड में है तो हमको क्या करना है? ऐड करना है. इसीलिए 10 plus 1 plus 1. 13. 10 के बाद 3. 10 plus 1 plus 1 plus 1 13. 14 मतलब 10 plus 4 हम नहीं लिख सकते
क्यों नहीं लिख सकते? ऐसा लिखने से 1 को हमें 4 बार रिपीट करना पड़ेगा. 4 बार किसी नंबर को रिपीट कर सकते हैं क्या? नो. रूल नंबर 1, we can repeat the number only 3 times. So 4, how you can write? 5 minus 1. So 10 plus 5 minus 1. 10 plus 4 is 14, right? 10 plus 4. But 4, how can you write? We cannot write 4 lines. So 4, how you will write? 10 plus 5 minus 1. So 10 के place में 10 is x. 5, you write 5. Minus means this 1 should be on the left hand side or right hand side? Left hand side. Minus means left hand side. Okay? So this is 14. समझ में आया? Like the same, we can write the numbers. How you can write the numbers? The same way. Have you got it? How to write? This is 10, 15. 10 plus 5. 10 is x, v is 5. This is 15. 16. 10 plus 6. 10 के बाद 6. You know how to write your class Roman number 7. 10 plus 7. 10 plus 8. 10 plus 9. 2 tens 20. Clear? 10 plus 10 is 20. This is 10 plus 9. This is 10 plus 8. This is 10 plus 7. 10 plus 7 is 17. Clear? Now we are going to learn how to write 20, 30, 40, 50. We know that x is 10. What is the rule number 1? We can repeat the number till 3 times. So 20. 10 plus 10 is 20. That means x is 20. 30 means 10 plus 10 plus 10. That is x. Here x we repeated 3 times. 40 means, can you repeat x 4 times? No, we cannot repeat. So how you have to write? Okay, 4 tens are 40. The same way 50 minus 10 is 40. 50 minus 10 is 40. 50 is L. 10 is x. So where we have to keep x now? To the left hand side or to the right hand side? Left hand side छोटा नंबर है तो सब्ट्रैक्ट करना है. राइट हैंड साइड छोटा नंबर है तो ऐड करना है. यहाँ 50 minus 10 और 50 plus 10 minus 10. मतलब x को किस तरफ लिखना है? लेफ्ट हैंड साइड. समझ में आया? Now 60. How you will get 60? 50 plus 10. 50 is L. Plus 10 means x को हम, you know that x is 10. राइट हैंड साइड लिखना है या लेफ्ट हैंड साइड लिखना है? राइट हैंड साइड. So this is L x. Okay. Now 70. 50 plus 10 plus 10. L x x. 80. 50 plus 10 plus 10 plus 10. That is L x x x. Okay. But for 90, can you write x 4 times? No, we cannot write. So that 90, how we will write? 100 minus 10. 100 minus 10. We know that C is 100. C is 100. So minus 10. This is C. This is x. C is 100. X is 10. Now minus means we have to keep it to the left hand side or right hand side? Left hand side. छोटा नंबर लेफ्ट हैंड साइड होने से सब्ट्रैक्शन होता है.
समझ में आया? XC, this is 90. Like the same, you can write any number. Follow. The Roman numerals are, this is 1, this is 1, this is 5, V is 5, X is 10, L 50, C 100, D 500 and 1000. What is the first rule? One number should not be repeated more than 3 times. This is the first rule. What is the second rule? If the smaller number is to the left hand side of the bigger number, you have to subtract a smaller number from the bigger number. मतलब अगर छोटा नंबर बड़ा नंबर के लेफ्ट हैंड साइड में है तो बड़ा नंबर में से छोटा नंबर को निकालना है. लाइक द सेम 5, यहाँ 1 है, यहाँ 5 है. बड़ा नंबर 5 है, छोटा नंबर 1 है. सो लेफ्ट हैंड साइड में है इसीलिए 5 - 1 is 4. यहाँ 1 छोटा नंबर है, 10 बड़ा नंबर है. सो लेफ्ट हैंड साइड में है इसीलिए 10 - 1 is 9. This is the rule number 2. What is the rule number 3? If the smaller number is to the right hand side of the bigger number, you have to add. That means छोटा नंबर बड़ा नंबर के राइट हैंड साइड में है तो ऐड करना है. ये 5 है, ये 1 है. ये 5 के 1 छोटा नंबर है, ये 5 के राइट हैंड साइड में है. सो इसीलिए 5 + 1 6. यहाँ 5 बड़ा नंबर है, 1 छोटा नंबर है. राइट हैंड साइड में है तो 5 + 1, that is 5 + 1 + 1 we have to add. I think समझ में आया? This is your Roman numerals. The same way you can frame the numbers. Whatever the number you want, you can frame. Okay children? Thank you and have a nice day.